Hi guys, hello everyone, this is Saurav here and welcome to the Vedantu VOS channel. In today's session, we'll be doing some amazing problems on rearrangements. If you recall, we have already covered rearrangements to electron deficient nitrogen, electron deficient oxygen, electron deficient carbon, and also we have discussed the rearrangements which are not of 1-2 type rearrangements. Non-1-2 rearrangements was discussed last week. So this is an extension of that, in fact a culmination of that, and in this session we'll be discussing some problems based on these rearrangements that we have done earlier. ये सारे सेशंस जो हैं वो JEE Advanced, InChO, NSEC के लिए काफ़ी important हैं, and today's session will be very important for someone who is preparing very rigorously for JEE Advanced, InChO as well as NSEC. So let's start today's session without much delay, and let's look at the first set of problems. So the first set of problems are these. You have a bicyclo compound and it is being treated with in an aqueous solvent, and you can see a Cl which is present over here. Now please try and understand that to solve this question you need to understand that this compound looks very much like a camphene hydrochloride. इसको हम बोलते हैं camphene hydrochloride. Camphene hydrochloride. If you recall, इसका हमने पढ़ा था नॉर्बोनाइन सिस्टम्स में रीअरेंजमेंट, एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व दैट इन द सेम मैनर. सो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि वी विल ट्राई टू आयोनाइज द bond which is between carbon and chlorine because it's an aqueous solvent, so the reaction will be SN1 type. So इस तरह से किया जाएगा, आप इसको इस तरह से लिखिए. You have a methyl over here and a methyl over here, and you have a chlorine and there is a methyl over here. So this chlorine will go out, and once this chlorine goes out, a positive charge is created. Now one of these methyl groups can also migrate, but that will create the same type of carbocation. So इसीलिए होता क्या है कि यहाँ से ये बॉन्ड माइग्रेट करता है इस तरफ, और इसके कारण आपको कुछ इस तरह का एक नया कार्बोकैटायन मिल जाता है. Me, and there is a methyl group and you will get a positive charge over here. आपको ये जो कार्बोकैटायन मिलता है, अब ये कार्बोकैटायन जो मीडियम में आए हुए, अगर इसको आपने ऑब्जर्व किया तो ये आप देखो इधर में ये दो कार्बन आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे. there are two carbons over here, there are two carbons over here. So इसको अगर आपने रीड्रॉ किया अच्छे से, then it will look like this. And you will have two methyl groups over here, and किसी एक कार्ब यहाँ पे there are two methyl groups, and there should be a methyl group over here, and there is a positive charge on one of these carbon atoms, and this is being treated with Cl minus which has come out in the medium. So effectively ये rearrangement होके कुछ इस तरह का एक compound बन जाता है. Me, there is Me, and यहाँ पे एक Cl आ जाएगा. Okay, so this is the outcome. इसमें याद रखिए कि what is the driving force? So there is a relief from steric strain moving from an endomethyl which is at C3 and hydrogen which is at C5, and when you are taking these endo positions, they turn into exo positions, and that becomes a driving force for this reaction. नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है. आप यहाँ पे अल्कोहल लिए हो H+, सो द मोमेंट यू सी OH and there is H+,
The first thing that you need to do is you have to react OH with H plus. So the moment you react OH with H plus, तो आपके पास कुछ इस तरह का एक सिस्टम बन जाएगा. Okay, now there is a methyl group over here. You will get OH2 plus. Now the moment oxygen gets a positive charge on itself, what happens is that oxygen will leave the molecule, and the moment it leaves the molecule, यहाँ से ये bond इधर move करता है और ये बाहर निकल जाता है. So 1 2. इसके कारण आपको what will happen is that you will end up getting something like this. Okay, and इस तरफ में एक 5 membered ring कुछ इस तरह का जनरेट हो जाएगा. परफेक्ट. यहां पे आप 2 मिथाइल ग्रुप्स लगा दीजिए, एंड इस कार्बन, तो क्योंकि this bond is being broken, so this carbon is going to receive the positive charge, and अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन रहा होगा. This hydrogen is sent back to the system, to the solution, and we end up getting something like this. So these both rearrangement reactions are in fact rearrangement reactions involving migration to an electron deficient carbon atom. If anybody is a little rusty on this and finds this a little challenging, so there is a double bond over here. You'll get this. So दोनों reaction जो है, these are migration to an electron deficient carbon atom. Okay, let's move on to the next set of problems. What you see over here is a ketene, and this is a peroxy acid. MCPBA is metachloroperoxybenzoic acid. तो इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बनाऊं तो कुछ इस तरह का रहता है. So there is chlorine and there is double bond O. So metachloroperoxybenzoic, peroxy लिंकेज आप देख रहे हो. पेरोक्सीबेंजोइक एसिड की जो रिएक्शंस होते हैं जनरली हमने देखे हैं कि बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में इनको यूटिलाइज किया जाता है. सो इफ यू रिकॉल, बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन में MCPBA वाज परफॉर्मिंग एन ऑक्सीजन इंसर्शन. ओके, सो यहाँ पे भी हम करेंगे क्या कि एक यहाँ पे देखो कि फाइनल रिएक्ट प्रोडक्ट लिखा गया है कि 4 मेंबर्ड लैक्टोन बन रहा है. लैक्टोन इज अ साइक्लिक एस्टर. Okay, lactone is a cyclic ester. How do we obtain a 4-membered cyclic ester from a ketene? चलिए देखते हैं. So अब सबसे पहले ऐसा कीजिए कि यहाँ से ऑक्सीजन इंसर्शन कर दीजिए इस एलीन बॉन्ड में. So Me3C Me3 आपने पढ़ा भी होगा आगे कि whenever you take a alkene and you react it with a peroxy acid, an epoxide is formed. So you create an epoxide first. आप एक epoxide बना दो. लेकिन ये ना unstable होता है. It's highly unstable. आप देख रहे हो 3-membered cyclic ester, ये काफी unstable है. So ये यहाँ से break करता है and it creates something like this. Carbon
O minus and there is C Me3. यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आता है. बिकॉज अ पॉजिटिव चार्ज कम्स ओवर हेयर, एक मिथाइल यहां से माइग्रेट कर जाएगा. ये मिथाइल यहां माइग्रेट करेगा. एंड मिथाइल यहां माइग्रेट करने के कारण होता क्या है कि यू गेट समथिंग लाइक दिस. कार्बन विथ मिथाइल, there is a positive charge and there is a methyl and carbon with or tertiary butyl unit, and you have C double bond O. और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है. तो आप देख रहे हो कि ये एक डाइपोलर स्पीशीज जैसा क्रिएट हो गया है. ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के साथ कंबाइन करके एक 4 मेंबर्ड लैक्टोन जनरेट कर देगा. सो योर प्रोडक्ट will be like this: C Me3 Me C double bond O. This is the product obtained. यही एक 4 membered cyclic lactone है, cyclic ester है जो आपको मिल जाता है. Okay, now let's move on to the next question. Next question एक काफी interesting सा question है क्योंकि it is very confusing to write the final product. A lot of people get confused over here. ये काफी सारी किताबों में भी आपने देखा होगा. सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि जो ये OH है उसको H+ के साथ रिएक्शन करा के I have to remove H2O and I have to convert this OH to I have to remove H2O and after removing H2O I will obtain a carbocation. So मैं कार्बोकेटायन पहले क्रिएट कर देता हूँ. ये PH, यहाँ पे एक PH है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज and there is okay. Now इसमें कुछ एक आउटकम्स आप बोल सकते हो क्या हो सकता है. इफ दिस हाइड्रोजन माइग्रेट्स ओवर हेयर तो आपको एक एरोमेटिक सिस्टम मिल जाएगा बट एक आयन के फॉर्म में आपको मिलेगा. ओके, एनी आयन इज नॉट प्रेफर्ड. हम एक न्यूट्रल कंपाउंड बनाने की कोशिश करें देन हाउ कैन वी क्रिएट इट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो मॉलिक्यूल है ये कुछ अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेता है. यहाँ पे आप 2 फिनाइल देख रहे हो, तो एक फिनाइल को आप इस तरह से लिख लो. ओके, एंड अनदर फिनाइल इज लाइक दिस. यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए. ठीक है, एंड देन यू राइट your 3-membered ring in this manner. pH और यहाँ भी pH. Okay. In fact, what happens next is very interesting because it is a way to create another new aromatic ring which is neutral. तो ये यहाँ आता है. Okay, let me show it with a different colored pen. So this will come over here, okay, and this bond will come over here, and because of which अब देखो कि 1 2 3 4 5 6 एक 6-member ring जनरेट हो जा रहा है. You're getting a 6-membered ring. Okay, it will be like this, and there will be this, there will be a pH. So 1 2 and then 3. Over here we'll have a pH, over here we'll have a pH, and between these 2 pH there is already a double bond and there is a hydrogen and a positive charge will come over here. Now we remove a H plus and we get this.
Okay. pH, pH, pH. This should be your product. ठीक है? काफी ब्यूटीफुल सा रिएक्शन है, क्योंकि ये रिएक्शन काफी अनकॉमन सा है। देखने से नहीं लग रहा है कि हमारे पास दो एरोमेटिक रिंग्स क्रिएट हो जाएंगे। हमें ये लग रहा था कि यहीं पे एक एरोमेटिक रिंग कुछ इस तरह का क्रिएट हो जाएगा, दैट विल बी द एंड ऑफ द रिएक्शन, लेकिन ऐसा होता नहीं है। This product is created because that imparts a higher resonance energy. Okay, let's move on to the next reaction. अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे कुछ थोड़ा सा weird सा एक molecule दिख रहा है आपको. Now, it is not a very difficult compound to assess. This is a diazoketone. Okay, this is a cyclic diazoketone. Now, how would the reaction take place? अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे sunlight दी गई है, यहाँ पे diazo group है N2. So whenever you use sunlight, what will happen? This will split out and it will move out as N2, and because of which we will get a very important intermediate over here, which will be known as a carbene. आपको एक कार्बीन मिलता है. Okay, because you are getting a carbene, this carbene undergoes a shift like this. This comes over here and this comes over here, which creates a 5-membered ring with a double bond C, double bond O. So you get a ketene over here. Once you get a ketene, now this ketene has to just react with methanol. बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ये यहाँ पे अटैक करेगा. Okay, and this will move over here and you will eventually end up getting something like this. OME, and we'll have, I'm gonna write it like this, and this can undergo tautomerization and you would get OME. Perfect. So आपने कीटीन क्रिएट किया एंड कीटीन का मिथेनॉल से रिएक्शन करा दिया. Perfect. Next reaction is आप इसको अगर ऑब्जर्व करो तो ये कुछ आपको ऑक्सीम जैसा एक सिस्टम दिख रहा है, एंड दिस ऑक्सीम्स में we perform something known as a Bakeman's rearrangement. Okay, ऑक्सीम्स में हम करते क्या है कि we perform a Bakeman's rearrangement. So ये TNB क्या है? This is trinitro benzene. Okay, this is trinitro benzene. So the reaction goes like this. So PH, C, CH, there's ME, ME, double bond N, O, trinitrobenzene. So it will be like this: NO2, NO2, NO2. Now please understand that if when we had read about Bakeman's rearrangement, हमने ये पढ़ा था कि only the group which is trans with respect to the leaving group will migrate. So ये बाहर निकलता है and यहाँ से pH उठ के यहाँ पे आता है. So 1, 2, and because of which it creates C. Just a moment. It will create this species
carbon, you have CH, Me, Me with a positive charge, double bond N, PH, and minus O, TNB निकल जाता है बाहर, because this is a very stable conjugate base of picric acid. मतलब ये एक very good leaving group है. Okay, it's a very good leaving group. Now यहाँ पे what will happen is H2O will attack and will lose H plus, and ultimately tautomerization will take place and it will generate a product like this: C double bond O and H, PH. That's it. Okay, आपको एमाइड मिल जा रहा है. रिकॉल ऑक्सीन से एमाइड बनाने का जो मेथड था, दैट वाज बेकमैन्स रीअरेंजमेंट. सो ये बेकमैन्स माइग्रेशन टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ये देखिए माइग्रेशन, यहाँ पे कार्बीन बन गया, यहाँ पे बेकमैन्स अरेंजमेंट जैसा हो गया. तो हम काफी सारे रिएक्शंस जो पहले पढ़े हैं उनको हम रिवाइज कर ले रहे हैं. लेट्स लुक एट दिस वन. ये बेयर विलेजर ऑक्सीडेशन जैसा एक रिएक्शन दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने पेरोक्सी बेंजोइक एसिड उठाया है. ओके, PHCO3H is peroxy benzoic acid. ओके, सो अगर इसका रिएक्शन हमने समझने की कोशिश की तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होगा कि दिस विल स्टे लाइक दिस. This is, you put a H over here, and this double bond O, first it will get protonated. कुछ इस तरह का protonation हो जाएगा. Okay, then your O minus, O, C double bond O, PH, that will attack over here. Clear? It will attack over here and it will create something like this. H, H. So I would be getting OH, O, O, C double bond O, PH. Once we get this, okay, once we get this, देखिए एरोज का थोड़ा मूवमेंट यहाँ पे समझो. Arrows will move like this. It will come over here, and one of the bonds connected to this carbon atom where oxygen is sending its electron, it will break, and it will come over here, and this bond will come over here, and this will come over here. मतलब कि this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. Eventually you will see the ring to get expanded. Okay, ring का expansion हो जाएगा और size increase कर जाएगा. Understood? So you will be observing something like this. H, H, and eventually this proton would be lost and you will be getting this compound.
Please remember that the configuration is retained. The configuration is retained. Okay, let's take the next question. ये क्वेश्चन भी सिमिलर है. Optically active compound, and that is being made to react with peroxy trifluoroacetic acid. So this will be also a reaction where Baeyer-Villiger oxidation will take place. Perfect. Now this reaction is your homework. ये रिएक्शन आपका होमवर्क है. प्लीज सेंड द सॉल्यूशंस टू saurav.goswami@vedantu.com and प्लीज ड्रॉ द प्रॉपर मैकेनिज्म. पूरा का पूरा मैकेनिज्म दिखाइए कैसे बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, इन विच क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर द बॉन्ड इज ब्रेकिंग, एंड इट इज अगर आपने इस तरह से शो किया देन इट विल बी इजियर फॉर मी टू जज वेदर यू हैव डन इट प्रॉपरली एंड will be easier for me to assess your solution. Let's look at this. This is a very interesting reaction. आप देखिए कि अल्फा हेलो कीटोन को लेके हम कर रहे थे फेवोर्स की रीअरेंजमेंट. ओके, फेवोर्स की रीअरेंजमेंट. सो ये होगा किस तरह से रिएक्शन. ये कुछ आपको थोड़ा एक क्यूब शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है. सो इनफैक्ट इस रिएक्शन का रिजल्ट काफी ब्यूटीफुल सा आता है. सो आप सबसे पहले क्या करो कि यहां से यहां पे प्रोटॉन है और यहां भी प्रोटॉन है, तो इस प्रोटॉन को रिमूव कर देते हैं एंड वी विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस. Double bond O, there will be a negative charge. Double bond O, there will be a negative charge, and there is a Br, and there is a Br. मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरह से प्रेजेंट है. So this will come over here and this will come over here and we will get नीचे का पार्ट मैं शो नहीं कर रहा हूं क्योंकि that part is easy to understand कि वहां पे हो क्या रहा है. So what you will be getting is something like this in the top part. Double bond O, double bond O. नीचे का पार्ट कुछ इस तरह से रह जाएगा. ओके, वंस दिस इज ऑब्टेन्ड, अब करना क्या है कि you attack OH minus at each of these C double bond O and किसी यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बना दीजिए. So 1, 2, 3, 4 and you will be getting something like this. Not over here. You will be getting a negative charge over here and over here COO minus. You will be getting a negative charge over here and you will be getting COO minus. ये eventually H3O plus के साथ reaction करके it will give us a dicarboxylic acid and the negative charge, the carbon ions will also turn into CH units. So यहाँ पे H लगा दीजिए, यहाँ पे H, यहाँ पे COOH, यहाँ पे भी COOH and eventually जब इसको हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड विल बी लॉस्ट. 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएंगे, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा and your final product will be क्यूबेन. ओके, ये फाइनल प्रोडक्ट जो रहेगा वो होगा
क्यूबेन। सो आपको इस कंपाउंड का फेवोस की रीअरेंजमेंट करके आपको क्यूबेन मिल रहा है। एंड दिस लास्ट रिएक्शन फॉर टुडे ये है क्लेजन का रीअरेंजमेंट। यूजुअली क्लेजन रीअरेंजमेंट में यहाँ पे ऑक्सीजन लेते थे, लेकिन इवन इफ ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट देन ऑल्सो वी कैन परफॉर्म द रिएक्शन इफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट। सो जब इसको हीट करेंगे कुछ इस तरह का रिएक्शन होगा। It will be like this. There is a methyl group and there will be NH CH2. So this will come over here, this will come over here, this will come over here. You'll get a 6-member transition state which will turn into this. Double bond NH H CH2 CH2 CH double bond CH2, and then it will undergo tautomerization. It will create something like this: NH2 CH2 CH double bond CH2. This M. Okay. So Claisen rearrangement हो जाएगा अगर even if oxygen is not present, when nitrogen is NH is present, then also Claisen rearrangement takes place. So that's all for today guys. एक homework के साथ मैं आपको आज विदा लेता हूँ, and let's meet each other in the next session. Until then, have a very lovely time, and please do write to me on saurav.goswami@vedantu.com with your solution. Bye bye and have a lovely time.